Hello students, myself engineer Neet Kumar. I am teaching physics from 20 years and today I start the lecture Physical World and Measurement. Physical World and Measurement. और इस टॉपिक से अभी तक का रिकॉर्ड है एक क्वेश्चन ईच एंड एवरी एग्जाम में आता है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, जेईई मेंस का एग्जाम हो या जेईई एडवांस का एग्जाम हो, वन क्वेश्चन ऑलवेज आया है अभी तक और आएगा। फिजिकल वर्ल्ड से बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है, यहां से कोई सवाल नहीं आते हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा वो मेजरमेंट से आएगा। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड से हम लोग बेसिकली देखेंगे कुछ बात जिसको जानना जरूरी है फिजिकल वर्ल्ड में। दैट इज नेम ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। There are four types of fundamental force in nature. Number one, gravitational force. Gravitational force, fundamental particle graviton, and range is infinite. Second, electromagnetic force. Fundamental particle photon, range infinite. Third, weak nuclear force. Fundamental particle boson, range 10 power minus 16 meter. A strong nuclear force, fundamental particle pi meson, range 10 power minus 15 meter. ठीक है, इसके बाद जो भी फोर्स नेचर में है सब इनके अंदर आएगा। सेकेंड थिंग है यहां पे फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देयर आर ओनली फोर फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन। फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन, नंबर वन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नंबर टू, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Number three, law of conservation of linear momentum. And number four, law of conservation of angular momentum. इस
इसके अलावा वन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट इज नॉट फंडामेंटल इन नेचर अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. मास इज नॉट कंजर्व. The noted point, conservation of mass is not fundamental. ये बेसिकली बेसिक आइडिया फिजिकल वर्ल्ड का. बट जो क्वेश्चन आता है that is related with unit and measurement, जिससे एक सवाल ऑलवेज आएगा. एंड यूनिट एंड मेजरमेंट में पहला बेसिक सवाल होता है यूनिट से, इसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस से सवाल होगा. यूनिट फाइंडिंग द यूनिट. फर्स्ट हमको ये पता करना है यूनिट किसका पता करना है, मतलब मेजरमेंट हम किसका करेंगे. तो फिजिक्स में जो मेजर करेंगे, that measurable character is called physical quantity. Physical quantity इसको कहेंगे. फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम फिजिक्स में मेजर कर सकते हैं और जो फिजिक्स में बिलोंग करेगा, जिसका घर फिजिक्स में है, जो फिजिक्स का फैमिली मेंबर है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, लिखो. द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इन फिजिक्स एंड विच फॉलोज सम बेसिक रूल्स ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. इसके दो पार्ट हैं. फर्स्ट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल मीन्स नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटी, दैट इज सेल्फ डिपेंडेंट. In very beginning, only three types of fundamental physical quantity, that is mass, length and time. Okay, and rest others are derived physical quantity. Second one is derived physical quantity. It depends on fundamental. Depends on fundamental. For example, बोलो, नहीं पता. A speed, force, वर्क, इट इज. बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी था इस समय तक, जब तक तीन ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रहा, मास, लेंथ एंड टाइम. फंडामेंटल या डेराइव्ड एनी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के स्मॉल से स्मॉल पार्ट को स्टैंडर्ड माना गया. दैट स्मॉल स्टैंडर्ड पार्ट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. What is unit? Unit का मतलब a small standard part of fundamental quantity. Fundamental का है, because fundamental को मेजर कर लेंगे तो derived अपने आप मेजर हो जाएगा. तो unit is defined as to measure लिखो. To measure any physical quantity, a small part of fundamental physical quantity is taken as a standard. Such a small standard part
is called unit. Now unit का मेजरमेंट का स्केल टाइम टू टाइम अलग अलग माना गया, उस बेसिस पे सिस्टम ऑफ यूनिट अडॉप्ट हुआ. शुरू से अभी तक देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट. सिस्टम ऑफ यूनिट, there are 4 types of system of unit. First, FPS system. Fourth, quant. Second system. Fourth for length, quant for mass, second for time. Number 2, CGS system. Centimeter, gram. Second system. Centimeter for length, gram for mass, second for time. And number 3, MKS system. Meter, kilogram, second system. Meter for length, kilogram mass, second time. And the fourth and last system of unit is SI system. It is system international. System international. Invented by a Roman physicist George Siemens Ohm. It is also called rational system. And the unit of mass, length and time in this system same as MKS system. So it is called modified form of MKS system. According to this system, there are 7 basic and 2 supplementary quantities. 7 are basic unit on the basis of SI system and 2 are supplementary. The 7 basic unit number 1, mass, kilogram, symbol is kg. Length, meter, m. Time, second, s. Fourth is electric current. Ampere, A. 5. Temperature, Kelvin, K. 6. Luminous intensity, candela, CD. And 7, amount of substance, mole.
MOL. These are the 7 basic units. And the 2 supplementary quantities. One is plane angle for 2D figure. Unit is radian. Rad. And solid angle for 3D. Asta radian. And symbol is SRAD. तो पूरी फिजिक्स के अंदर टिल डेट देयर आर 7 बेसिक यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट. ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर डेराइव्ड क्वांटिटी इन होल फिजिक्स. अब हम लोग इसके बाद जितना भी डेराइव्ड क्वांटिटी है उसका यूनिट देखेंगे, यूनिट फाइंड करेंगे. ना यूनिट का लिस्ट बनाने से पहले फर्स्ट हम लोग डायमेंशन के बारे में जानेंगे, बिकॉज दोनों का लिस्ट एक साथ बनाएंगे. नाउ सम बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट डायमेंशन. डायमेंशन क्या होता है? ओके, डायमेंशन डायमेंशन का मतलब क्या है? सपोज दैट there is any physical quantity like a speed and the unit of a speed is मीटर पर सेकेंड. समझे इसका? मीटर पर सेकेंड में कोई आपसे पूछे व्हाट इज द पावर ऑफ मास इन स्पीड. मास का यूनिट होता है ऐसा यूनिट केजी. एम के यूनिट केजी, और केजी का कोई पावर नहीं, मतलब 0. मीटर 1 सेकेंड -1 means a speed depends on 0 power of mass, means not depends on mass. 1 power of distance means length, and -1 power of time. This is considered as dimension. Dimension means the power of any physical quantity in terms of basic unit. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक यूनिट के टर्म में जो पावर होता है उसको डायमेंशन कहते हैं. बट आपसे अगर कोई पूछे कि डायमेंशन बताओ स्पीड का, तो इसका मतलब ये कहानी नहीं बताना है कि केजी का पावर 0 होगा, मीटर का पावर 1 होगा, सेकंड का पावर -1 होगा. पूछने वाले का मतलब है एक एक्सप्रेशन पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है. दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला. बट देयर इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशन का मतलब ओनली पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन व्हिच इट डिपेंड्स. बट डायमेंशनल फॉर्मूला इज फॉर्मूला, एक्सप्रेशन और सिंबल ऑन व्हिच एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स. जिसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करके दिया जाए, मान करके दिया जाए, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला. And the power is dimension. So right, the dimension का मतलब right, the power of any physical quantity in terms of its basic unit is called dimension. And the dimensional formula, right? Dimensional formula the expression or symbol with which any physical quantity represented is called dimensional formula. जितना भी बेसिक क्वांटिटी है उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एज्यूम किया गया. सचिन, जैसे यूनिट एज्यूम किया गया, डायमेंशनल फॉर्मूला भी एज्यूम किया गया. बेसिक 7 बेसिक क्वांटिटी, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला इस तरह से एज्यूम किया गया. मास के लिए m, लेंथ l, टाइम t, इलेक्ट्रिक करंट A और I.
temperature, K, luminous intensity, CD, amount of substance, MOL. These are the dimensional formula of 7 basic quantity. And the rest 2 supplementary quantity have no any dimensional formula. अभी तक कोई इन्वेंशन नहीं है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का और एग्जिस्ट भी नहीं करेगा बिकॉज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंगल इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर, इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी है. बट सप्लीमेंट में लाने का ये मतलब हुआ कि एंगल मेजर करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि पहले डिस्टेंस को मेजर करें, टाइम को मेजर करें, एंगल को डायरेक्ट मेजर करते हैं. इसलिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल का टिल डेट अभी तक कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं माना गया है बिकॉज एंगल डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड टाइम. लेकिन एंगल को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसको बेसिक यूनिट के टर्म में न डाल करके सप्लीमेंट में डाला गया है फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर. मतलब ये नोटेड पॉइंट हुआ, ये क्वेश्चन मार्क्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. वैसे तो कोई भी यूनिट का, कोई भी क्वांटिटी का अगर यूनिट है तो डायमेंशन भी हो, बट ये एक्सेप्शनल केस है. प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल इन स्पाइट ऑफ यूनिट देयर इज नो एनी डायमेंशनल फॉर्मूला. कोई डायमेंशनल फॉर्मूला इसका नहीं माना गया है बिकॉज मैथमेटिकली एग्जिस्ट करता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका नहीं है. तो द नोटेड पॉइंट इज प्लेन एंगल एंड solid angle has no dimension. Second is ratio of same physical quantity. A ratio of same physical quantity have no unit and dimension, and जितना भी न्यूमेरिक कांस्टेंट है, all the numeric constant are dimensionless. Now next step.